beta particle, or you can say gamma radiations. अल्फा पार्टिकल के लिए हम ये कह लेते हैं हीलियम 2 4, बीटा को हम इलेक्ट्रॉन कह लेते हैं E-1 0 and gamma is 0 0. So these are the three radiations which comes out of a radioactive substance. कोई भी radioactive substance होता है तो उसका न्यूक्लियस क्या होता है, वो रेडिएशंस छोड़ता रहता है. अल्फा डिके और बीटा डिके और गामा डिके. अल्फा एंड बीटा कैन नॉट गो साइमल्टेनियसली, अलग अलग रहते हैं. अल्फा गामा किसी के साथ भी अटैच हो सकते हैं. तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशंस. अल्फा, यू नो, अल्फा इज पॉजिटिवली चार्ज. ये समझ में आ रहा है कि अल्फा पॉजिटिव है तो न्यूक्लियस के अंदर में वी हैव न्यूट्रॉन्स, वी हैव प्रोटॉन्स. तो थोड़ा हजम हो जाती है बात कि हाँ चलो जी ठीक है, इसके अंदर से कोई पॉजिटिव पार्टिकल, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है तो इसमें से पॉजिटिवली चार्ज निकल रहा है. गामा भी मान लेते हैं, गामा इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, तो एनर्जी रिलीज हो गई है तो ये थोड़ा स्टेबल होगा. अनस्टेबल था, एनर्जी रिलीज करने पे थोड़ा स्टेबल होगा, तो ये भी बात हम मान लेते हैं, ये भी. लेकिन बीटा पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन, E-1, इलेक्ट्रॉन को ही बीटा पार्टिकल कहते हैं. अब न्यूक्लियस के अंदर तो वी हैव न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस के अंदर से बीटा पार्टिकल कैसे निकल रहा है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो उन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है? दिस इज कॉल्ड द बीटा डिके, और this involves weak nuclear force. So I am explaining you this beta decay, how it happens. Now see here, in beta decay the nucleus emits an electron emit karta hai, and an uncharged particle called antineutrino. This is antineutrino. So we have a particle neutrino, and neutrino ka antiparticle kya hai? Antineutrino. We have a particle electron का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन. तो वैसे न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल क्या है? एंटी न्यूट्रिनो. तो ये न्यूट्रॉन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. ये देखने में बड़ी सिंपल लग रही, बट बहुत मुश्किल से इसके बारे में पता लगा. तो न्यूट्रॉन साइज में बड़ा होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन एंड इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो. अगर मैंने बार डाला है तो इट मींस एंटी न्यूट्रिनो. दिस इज एंटी न्यूट्रिनो. तो इन दिस वे न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो. तो इन दिस वे इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड. इन दिस वे बीटा डिके टेक्स प्लेस. तो जिस रिएक्शन में बीटा डिके हो रहा है और उस रिएक्शन में वी हैव इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, दैट रिएक्शंस involve weak nuclear forces. तो ये दोनों आपस में, the interaction between electron, the interaction between electron and antineutrino is due to weak nuclear force. Weak nuclear फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से काफी वीक होती है. तो दिस इज, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो वंस अगेन न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो. दिस इज बीटा डिके. व्हाट इज बीटा? बीटा इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, रफली यू कैन से. तो इलेक्ट्रॉन निकलता है न्यूक्लियस में से. इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है वो मैंने आपको बताया, एंड दैट इज द बीटा डिके. और बीटा डिके में जो इंटरेक्शन होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, दैट इज बिकॉज ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स. देयर इज मच फिजिक्स बिहाइंड इट, बट इट इज आउट ऑफ योर स्कोप, तो आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल अबाउट दीज थिंग्स. एंड द एक्सचेंज पार्टिकल, जो इसके बीच में एक्सचेंज होता है, दैट इज गिवन बाय वेक्टर बोसॉन्स W plus negative or Z0. These are vector bosons. These are elementary particles. You can see. तो इन elementary particles में जो exchange particle है, that is vector boson. जैसे मैंने exchange particle पहले बताया आपको, graviton is under research, gravitational field में, electromagnetism में photon is the exchange particle, और pi mesons or gluons are the exchange particles in strong nuclear forces. In weak nuclear forces, vector bosons are the, there are two types of vector bosons, W plus minus Z0.
तो ये 3 पार्टिकल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज, दे इंटरेक्ट, इसके थ्रू दे इंटरेक्ट। तो इनके बीच में जो आपस में जो भी इंटरेक्शन होते हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ these particles, and this is the field particles also that transmit weak nuclear force between elementary particles are the massive vector bosons. तो ये बीटा डिके के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। बीटा डिके is one of the experiment, one of the example in which weak nuclear force exists. Now let's do some characteristics. This weak nuclear force exists between leptons and leptons. These are leptons. Electron, neutrino, positron, antineutrino, these are leptons. We have leptons, electron and positron is a lepton, and neutrino and antineutrino is also a lepton. तो lepton के बीच में होती है, ये है leptons, एक इलेक्ट्रॉन, इसका एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव, ये एक न्यूट्रिनो और ये न्यूट्रिनो और इसका एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो, ये दो एक साथ चलते हैं और ये दो एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। इस रिएक्शन को उल्टा भी कर सकते हैं, इस रिएक्शन को हम उल्टा कर सकते हैं, दैट इज बीटा डिके, दैट इज बीटा पॉजिटिव डिके, उसको हम उल्टा कर सकते हैं लाइक दिस। सी दोस हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड, यू कैन सी p कन्वर्ट्स टू न्यूट्रॉन, ये सेट भेजेंगे प्लस पॉजिट्रॉन, ये सेट भेजेंगे प्लस न्यूट्रिनो, लाइक दिस। तो ये दिस इज बीटा पॉजिटिव डिके, this is beta negative decay or beta decay, or you can say this is, anyway इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस होंगी वो किसके कारण होंगी, because of these particles, you can say these are the exchange particles, and the force is weak nuclear force. So they exist between leptons and leptons, these are leptons, or also between lepton and mesons. तो mesons के बारे में मैंने pi mesons के बारे में बताया था थोड़ा सा आपको, तो उनके बीच में भी ये एग्जिस्ट करती है। It is 10 raised to power 25 times stronger than the gravitational force. Gravitational force से काफी ज्यादा stronger, 10 raised to power 25 times. But strong nuclear force से काफी weak है। It is 10 raised to power 25 times stronger than the gravitational force. Range is extremely small. ये तो बहुत ही कम है। The strong nuclear force से भी इसका range कम है। Strong nuclear force फिर भी 3 फर्मी तक एग्जिस्ट करती है, फ्रॉम यू कैन से 0.5 to 3 फर्मी के बीच में वो अट्रैक्टिव रहती है, तो 3 फर्मी तक तो एग्जिस्ट करती है, बट ये बहुत कम। सी 10⁻⁻17 मीटर टू 10⁻⁻16 मीटर, 10⁻⁻17 कितना फर्मी होता होगा, 0.01 फर्मी से 0.1 फर्मी, इट एग्जिस्ट very small range, it has a very small range. और field particles के बारे में बता दिए, the field particles that transmit weak nuclear force between elementary particles are the massive vector bosons W plus minus Z0. So these are the, you can say, weak nuclear force. Now, weak nuclear force is very difficult to say it is attractive or repulsive. Basically it is neither attractive nor repulsive, ना ये attractive होती है ना ये repulsive होती है। These may not be a central force, they may not be conservative in nature. That is the other things, but these are the characteristics which I have found it for you for weak nuclear forces. So ये characteristics हैं weak nuclear forces के, आप addition लिख सकते हैं, they are not central forces, maybe or may not be, they may be conservative sometimes, may not be conservative, but nothing is told about it. They don't obey inverse square law, they don't obey inverse square law. So this is all about the weak nuclear force. Now before completing the fundamental forces, तो मैंने आपको पीछे 2-3 लेक्चर्स में पढ़ाई 4 types of fundamental forces, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं unification of forces. Unification. Now scientists have tried their best to unify all these 4 fundamental forces. यूनिफिकेशन, हम साइंटिस्ट जब भी होते हैं वो ट्राई करते हैं एक फोर्स को दूसरे से रिलेट करने के लिए, एक फोर्स से दूसरी फोर्स को निकालते हैं, रिलेट करते हैं, तो वी आर नाउ गोइंग फॉर यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले तो
unification of forces में सबसे पहले I will take the name of Newton, Sir Isaac Newton. What he has done, he unified the terrestrial and unified the gravitational force. Unified the gravitational force over, you can say, terrestrial or celestial domains. Over terrestrial, जमीन के ऊपर, and celestial domain. ये मैंने पहले भी बताया था. तो Isaac Newton ने gravitational force को unify किया. Not only for Earth, it is applicable on the bodies which is over Earth, terrestrial bodies के ऊपर भी है, applicable है, and even on the celestial domain. तो he unified the gravitational force. तो मैंने बताया gravitational force जो है सबसे important force है और पूरे ब्रह्मांड में ये चल रही है, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, celestial bodies को चला रही है, terrestrial bodies को भी चला रही है. And he tried to unify this gravitational force over terrestrial and celestial domain. Then Oersted, you know, आपने पिछले पढ़ा होगा, Oersted ने क्या बताया? Oersted and you can say Faraday. Oersted and Faraday around 1820 and 1830 के around होगा. Oersted around 1820 और Faraday around 1830 के around. What they have unique? Oersted ने क्या बताया? कि electricity give rise to magnetism. और Faraday ने क्या बताया? Magnetism give rise to electricity. ये आपने 10th class में पढ़ा होगा, electromagnetic induction and Oersted experiment. So Oersted and Faraday unified that, or you can say they unified the electricity and electromagnetic forces, or you can say they showed that electric and magnetic phenomena are, you can say, inseparable. पहले भी मैंने एक लेक्चर में बताया था कि electric and magnetic effects जो हैं, electric और magnetic phenomena are inseparable. They cannot be separated. So electricity produces magnetism and magnetism produces electricity, and it is unified by Oersted and Faraday. Third is Maxwell. Maxwell in 1873. Maxwell in about 1873 unified the electromagnetic force, or you can say unified electromagnetism with optics. Electromagnetism with optics by discovering that, or you can say by proving that light is an electromagnetic wave. Electromagnetic wave. So Maxwell in 1873, about 1873, he unified the electromagnetism with optics. Now, how he unified electromagnetism with optics? Now, optics when we study about light, and he proved that light is an electromagnetic wave. Electromagnetic wave. It moves in the form of electric and magnetic wave. Like this, they are coincident particles to each other. So electromagnetic wave है light. तो इसका मतलब he has Maxwell unified electromagnetism with optics. Also unified magnetism with electric and magnetic fields. He unified the gravitational force over terrestrial and celestial domain. Later on, Albert Einstein also tried to unify electromagnetism with you can say weak nuclear force, but at that time he was not able to prove it. But later in Abdus Salam ने experiment तो नहीं किया, but he tried to unify unification of electromagnetic force, unification of electromagnetic force and this one जो मैंने अभी बताई weak nuclear
force. Abdus give an idea of unification of electromagnetic force and weak nuclear force, which was proved. Carnot-Ruppert proved it. Carnot-Ruppert in 1984. See, this is the latest one. 1984. Later than these things. It proved it. Proved it experimentally. Proved it experimentally. So see, now we are trying to unify all the forces. We are trying to unify all the four forces into one force, that is the gravitational force. So we are trying to do it. But at present, we are not able to get that idea. See, these are the four, you can say, scientists, are exactly to unify the gravitational force on terrestrial and celestial domain. Oersted and Faraday said that electric and magnetic fields are inseparable, they are unified. Maxwell proved that electromagnetism and optics are unified because light is an electromagnetic wave. Abdus gave an idea of unification of electromagnetic force with weak nuclear forces, and this was also given by the Albert Einstein, and it is proved experimentally by Carnot-Ruppert. What? Unification of electromagnetic force and weak nuclear forces. That's all for today. Thank you. Thank you very much.